Welcome friends. Yesterday we discussed the trigonometric functions in the whole plane. Just I revised. That is, in the plane we divide the whole plane into 4 quadrants. In the first quadrant all the trigonometric ratios are positive. In the second quadrant only sine is positive. Its reciprocal will also be positive. That's understood. In the third quadrant tan is positive, and in the fourth quadrant cos is positive. 0 to pi by 2, that is in the first quadrant, pi by 2 to pi second quadrant, pi to 3 pi by 2 third quadrant, 3 pi by 2 to 2 pi, that is the fourth quadrant. So all the trigonometric ratios are positive in the first quadrant, sine is positive in the second, and the tan is positive in the third quadrant, and cos is positive in the fourth quadrant. Then in metric you have already studied these 3 trigonometric ratios. Sin square theta plus cos square theta is always 1. 1 plus tan square theta is equal to secant square theta, and 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta. We will use these identities here in this chapter also. Now up to pi by 2 you are familiar with the values of all the angles: 0, pi by 6, pi by 4, pi by 3 and pi by 2. Now we will discuss the angle greater than pi by 2, or we can say in the whole plane. Now for example, what will be the value of sine 120? Yesterday we discussed the some relations with the angles pi and pi by 2. Even multiples of 90, the trigonometric ratios not change, that is multiples of 180 we can say. And when the multiples of odd multiples of 90 will be there, the trigonometric ratios will be converted: sine converted into cos, cos converted into sine, tan converted into cot and vice versa, secant converted into cosecant and vice versa. Now here we want to find the value of sine 120, or we can say sine 2 pi by 3 radians. So nearest multiple here 2 pi by 3 120, that we can say, we can write 120 as 180 minus 60 degree. So it can be written as sine pi minus pi by 3. So in which quadrant, first of all we decide in which quadrant this angle lie. 120 lies in the second quadrant. In the second quadrant we know that the sine is always positive. So the first point is the value of sine 20 will be positive. So it can be written as sine pi minus pi by 3. Yesterday we discussed that relation: sine pi minus theta is always equal to sine theta. So it will be sine pi by 3. और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू पहले फैमिलियर और वो आपने मैट्रिक में भी कर रखा है, इट विल बी √3/2. Similarly, this can also be written as 90 plus 30. So that is pi by 2 plus pi by 6. Here now it is the odd multiple of 90. So the sine will be converted into cos. So cos of theta. So the cos of theta here, theta is pi by 6. So it will be cos pi by 6. Cos pi by 6 from the table, its value is √3/2. Same thing. Similarly, what will be the value of tan 5 pi by 3? 5 pi by 3. तो मीन्स अगर हम इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम 300 डिग्री. 300 डिग्री दैट गोज टू द फोर्थ क्वाड्रेंट. In the fourth quadrant, cos is positive. So here we have to find the value of tan. The first point is the value of the tan will be negative. So how we find the value? Here the nearest multiple of pi, that will be 2 pi. We can write 300 as 360 minus 60. So in radians it can be written as tan 2 pi minus pi by 3. So tan 2 pi minus theta, it will be tan theta. According to quadrant it will be negative. So minus tan theta. Theta is pi by 3. तो minus tan pi by 3. टेबल वही आएगा जो मैट्रिक में आपने जितने एंगल्स कर रखे थे, वही स्टैंडर्ड 5 एंगल्स वही चलेंगे. तो minus tan pi by 3 is minus √3. Similarly, we can write this sin pi by 3 tan 300 को tan 270 plus 30 भी लिख सकते थे. तो that is 3 pi by 2 plus pi by 6.
So here you having the odd multiple of 90, so tan will be converted into cot. It will be cot pi by 6. According to quadrant it will be minus cot pi by 6, that will be minus root 3. तो किसी भी में भी आप कर सकते हो दोनों में. Now next point, sine of minus theta. Here theta we consider, assume that it is acute. So sine of minus theta means clockwise direction. So here this is minus theta, let this be minus theta. So its value sine of minus theta in the fourth quadrant, we know that sine is always negative. So sine of minus theta can be written as minus sine theta. For each and every angle, if the sine having negative angle, we write minus sine angle positive कर देंगे, minus sine theta. Similarly cos minus theta, because of the fourth quadrant cos will be positive, so minus ignore कर देंगे, it will be cos theta. Tan of minus theta, it will be minus tan theta. साइन और tan के लिए माइनस बाहर आ जाएगा, cos के लिए माइनस खत्म हो जाएगा, cos theta will remain. Now we will solve the exercise 3.2. So first of all we solve from question 6 to 10 first, then we solve 1 to 5 questions. We have to find the value of sin 765. So nearest multiple of 90, it will be 720. That is 720 plus 45. तो 720 में क्या होगा? We divide the plane into 4 quadrants. 0 से लेकर के ये 360, फिर आगे रोटेट हुआ, 360 से ये 720 यहाँ आ गया, 720 से 45 फिर और आगे चला गया. तो इट मीन्स दिस एंगल विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल we decide where this angle will lie, in which quadrant this angle will lie. So in the first quadrant all the trigonometric ratios are positive, so its value will be positive. Now how we break up this one? This sin 765 can be written as sin 720 plus 45. So here you having the even multiple of 90, it can be written as 4 pi, 4 into 180. तो 4 pi plus pi by 4 अगर रेडियंस में करते हैं तो, so its sign will remain sine. So sine in the first quadrant will be positive, so it can be written as sin 45. वही सेम वैल्यू वही टेबल से मैंने आपको बोला है, इट्स वैल्यू विल बी 1 by √2. वही 5 एंगल्स 0, 30, 45, 60, 90 पे ही आ जाएगा घूम करके ये क्वेश्चन. Similarly cosecant of minus 1410, we know that cosecant minus theta is always minus cosecant theta. माइनस बाहर ला सकते हो, तो cosecant minus cosecant 1410 degree. So first of all we find the value of this cosecant 1410, then we apply this minus sign in the answer. So how, here I am going to find the value of cosecant 1410. तो 1410 के साथ नियरेस्ट मल्टीपल 90 का चेक करोगे तो वो आएगा 1440. 4 राउंड ही पूरे हो जाएंगे 1440 पे, फिर -30 वापस आ जाएगा 30, तो मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यहाँ आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर. तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉसिकेंट नेगेटिव होता है, तो कॉसिकेंट ये 90 का इवन मल्टीपल आ गया, तो इवन मल्टीपल के लिए कॉसिकेंट ही रहेगा 30, थीटा साथ आ जाएगा. फोर्थ क्वाड्रेंट में था तो माइनस आ जाएगा, माइनस कॉसिकेंट 30 डिग्री. तो माइनस कॉसिकेंट 30 विल बी -2 फ्रॉम द टेबल, और माइनस ही हमारा क्वेश्चन, हमने वैल्यू निकालनी थी माइनस कॉसिकेंट 1410 की, तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ -2, इट विल बी 2. पहले इसको माइनस को एक बार छोड़ देंगे, पहले वैसे वैल्यू निकाल देंगे, बाद में वही माइनस फिर आंसर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2. तो जस्ट आपको इस एंगल्स को ब्रेक कैसे करना है ये पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए, कैसे इसके नियरेस्ट 90 के मल्टीपल्स के साथ लेकर के आना है. नाउ tan 19 pi by 3, तो 6 3 is 18, तो इट कैन बी रिटन एज 6 and 1 by 3 pi. तो मीन 6 pi कंप्लीट हो गया, pi by 3 अलग हो गया, तो इट कैन बी रिटन एज 6 pi plus pi by 3. 6 pi अगेन वेयर इट विल लाई, तो 6 pi कहाँ पे कंप्लीट होगा, देखो यहाँ से हम लेते हैं, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक राउंड होता है 2 pi, 3 राउंड भी पूरे हो जाएंगे, उसके बाद pi by 3 यहाँ जाएगा, ये फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया. तो पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए tan इट्स वैल्यू विल बी पॉजिटिव. तो tan 6 pi
plus pi by 3 will be 10 pi by 10 will remain 10 because you having the even multiple of 90. So revise the formulas which we discussed yesterday, then you start that exercise. So 10 pi by 3, 10 pi by 3 from the table, its value is root 3. So first of all decide the quadrant where it will lie. Similarly, sine minus 11 pi by 3, sine of minus theta, we know that sine of minus theta is minus sine theta, minus बाहर आ जाएगा. So minus sine 11 pi by 3. So first of all we find the value of sine 11 pi by 3, then we apply the minus sign. So sine pi 11 pi by 3, the nearest multiple of pi it will be 12. 12 by 3 means 4 pi. So 4 pi minus pi by 3. Again 4 pi माइनस करेंगे तो कोई एक्यूट एंगल तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा. यहाँ वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा. तो साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3 इट विल बी माइनस साइन पाई बाई 3, दैट इज माइनस रूट 3 बाई 2. फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा माइनस रूट 3 बाई 2. अब उन्हें निकालनी वैल्यू किसकी थी, माइनस साइन 11 पाई बाई 3. तो माइनस साइन 11 पाई बाई 3 कितना होगा, माइनस ऑफ माइनस रूट 3 बाई 2, इट विल बी रूट 3 बाई 2. So first of all, how we break these angles, that step is the main important breakage of the angle. Similarly, cot minus 15 pi by 4, cot minus theta, it is minus cot theta. So here 4 4 is 16, तो 4 pi के nearest होगा 4 pi minus pi by 4. इसको break कर देते हैं. 15 pi by 3 को क्या आएगा, 4 pi minus pi by 4. एल्सियम लेंगे 4 तो 16 पाई माइनस 1 पाई तो 15 पाई बाय. तो कॉट 4 पाई माइनस पाई बाई 4, अगेन इट विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. इन द फोर्थ क्वाड्रेंट कॉट विल बी नेगेटिव, सो माइनस कॉट पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4 इज 1, सो इट्स वैल्यू विल बी माइनस 1. और क्वेश्चन में भी माइनस था, तो माइनस कॉट 15 पाई बाई 4 माइनस ऑफ माइनस 1 इट विल बी प्लस 1. तो मेन पॉइंट ब्रेकेज ऑफ द एंगल इन द मल्टीपल्स ऑफ 90. And the other side, the second angle, either we subtract or add, that angle should be acute. Either it will be pi by 4, either it will be pi by 6, either it will be pi by 3. इन तीनों एंगल्स के साथ ये ब्रेक हो जाएगा. तो वैल्यूज और टेबल आपको अच्छी तरह लर्न होना चाहिए. नाउ वी कम्स टू द क्वेश्चन 1 to 5. तो हाउ we solve the question number 1 to 5. We have given cos theta is equal to minus half. वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज गिवन. मैट्रिक में तो आपको पॉजिटिव ही गिवन होती थी. आप ट्रायंगल बनाते थे, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज आइडेंटिफाई करके पाइथागोरस से मिसिंग साइड निकाल लेते थे, फिर उसको सॉल्व कर. लेकिन अब हमारे पास क्या होगा, अब आपको क्वाड्रेंट मेंशन होगा ना. थीटा इज नॉट एक्यूट, सो वी नॉट अप्लाई दैट ट्रायंगल मेथड हियर. द cos थीटा इज माइनस हाफ. इट इज गिवन दैट थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. We have to find the third quadrant, means x is greater than pi, less than 3 pi by 2. pi से लेकर के 3 pi by 2 के बीच में होगा. Now we have to find the value of all the other 5 trigonometric ratios. So first of all we decide the signs of the. So in the third quadrant we know that all sin tan and cot will be positive in the third quadrant. So here the cos is negative, sine will also be negative, secant and cosecant will also be negative, but tan and cot will be positive. Now how we find the values? Now we use the identities. First, cos theta is having a relation with sin theta. What is that relation? Because sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Put the value of cos minus half का स्क्वायर करेंगे 1/4 plus sin square theta is equal to 1. 1/4 उधर लेके जाएंगे, राइट साइड में माइनस हो जाएगा. साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 minus 1/4, इट विल बी 3/4. सो व्हेन वी हियर remove taking the square root, sin theta will be, here we use the plus minus sign. रूट 3 4 का स्क्वायर रूट 2, तो प्लस माइनस रूट 3/2. बट वी नो दैट इन द थर्ड क्वाड्रेंट sign is negative, so we ignore the plus sign. So what will be the answer? Sin theta will be minus root 3/2. According to quadrant you have to use the sign. Now sin taking its reciprocal we get cosecant. So cosecant theta is equal to minus 2/√3. Now we know that tan theta is equal to sin theta upon cos theta.
पुट द वैल्यूज ऑफ साइन एंड कॉस, साइन की वैल्यू निकाली हमने -√3/2, कॉस की वैल्यू आपको गिवन थी -½ पुट बोथ द वैल्यूज, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा विल बी √3. We know that in the third quadrant tan is always positive, so it will be +√3. Taking its reciprocal, we get cot theta. Cot theta is taking the value reciprocal of this value 1/√3. Reciprocal of the cos, that will be secant. Secant theta will be -2/1. In this way, using the identity sine and cos, we can find all the other ratios. According to quadrant, we use plus minus sign. Similarly, in second question, you are given sin x is equal to 3/5 and x is the second quadrant. In the second quadrant means x is greater than pi/2 but less than pi. 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है. We have to find the values of all the other 5 trigonometric ratios. Same, apply the identity sin square theta plus cos square theta 1. Put the value of sin, taking its square, then shifting this towards right side, we get 1 minus 9/25, 16/25. Taking cos x will be taking square root of this, we use plus minus sign, so it will be plus minus 4/5, and we know that in the second quadrant cos is negative, so cos x will be minus 4/5. Taking its reciprocal, the secant x will be minus 5/4. Taking the reciprocal of the sine, we get cosecant, reciprocal of its value, it will be 5/3. Again, tan x is equal to sin x upon cos x. Put the value of sin and cos, cancelling 5 से 5, we get -3/4. In the second quadrant, we know that the tan is negative, so its value will be negative -3/4. Cot x, taking its reciprocal, we get -4/3. Now you can try question number 3rd, 4th and 5th similar in this way. So try this exercise today. Thank you.